Welcome to this video. In this video, we are going to study Sylow's theorem, its statements and proofs. We know that the Sylow theorems has three parts and each part has its own importance. First of all, let me recall the Lagrange's theorem. We know that if we talk about Lagrange's theorem, then this theorem says if we have a group of order G, group of order N, then any of its subgroup H, this is a subgroup of G, has the order H which divides N, right? That means the order of subgroup of a group G divides the order of G in case where G is a finite group, right? But what about the converse of this theorem? That means if we are given that order of G is equal to N, and suppose some alpha divides N, so in that case, can we have a subgroup H whose order is alpha? ओके, वी नो और हमने कई बार इसके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि इस तरीके से हमेशा ट्रू होना इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, बट if this alpha becomes a prime number p, then we have some advantage. Okay, साइलस थ्योरम इसी के बारे में ही हमें कुछ कंक्लूजन प्रोवाइड करता है. Even you can consider the Sylow theorem as a partial converse of Lagrange's theorem. Okay, you can consider, we can consider Sylow's theorem as a partial converse of Lagrange's theorem. ओके, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. अब ये है किस तरीके से, वो हम आगे जब सिलोस थ्योरम को डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम देखने वाले हैं. सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ सिलोस थ्योरम, एंड दिस theorem is divided into three parts. So let me write each and every part in detail. So we have a theorem. This theorem is theorem number 18, and this tale about Sylow's theorem. Okay, so let G be a group, G be a group of order p to the power alpha time m, where p does not divides m. Okay, and p be a prime. ठीक है, then first conclusion is first statement, or you can consider this first part of Sylow's theorem. It says Sylow p subgroups, Sylow p subgroups of G exist. लेट मी राइट फर्स्ट और फिर हम इन तीनों स्टेटमेंट को समझेंगे. दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ Sylow p subgroup of G is not equals to phi. Then second part says if p is that this p is a Sylow p subgroup, Sylow p subgroup of G, and Q is any p subgroup of G, then in that case, then there
exist some G in G such that this Q is a subgroup of G P G inverse. Okay, that means this Q contained in some conjugate of P. Okay, in particular any two Sylow p subgroups of G are conjugate in G. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमें कि जब कभी भी हमारे पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है तो इस केस में हमेशा हमारे पास एक सिलो पी सब ग्रुप होगा। ओके, कैसा भी ग्रुप हो फाइनाइट ऑर्डर का उसके पास हमेशा सिलो पी सब ग्रुप्स होते ही हैं। इसका मतलब इफ वी टॉक अबाउट द सेट ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी देन इट इज ऑलवेज अ नॉन एम्प्टी सेट। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि हाँ हमने ऑलरेडी सिलो पी सब ग्रुप और पी सब ग्रुप्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सिलो पी सब ग्रुप्स लार्जेस्ट पी सब ग्रुप्स होते हैं और पी सब ग्रुप्स किसी भी प्राइम की पावर वाले जितने भी इस ऑर्डर के सब ग्रुप्स होते हैं उनको हम पी सब ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि हमेशा p subgroups is a subgroup of conjugate of सिलो p subgroup। ठीक है, हर एक p subgroup के लिए we can always identify a conjugate of this सिलो p subgroup p such that this q is a subgroup of this conjugate। ठीक है, तो हमेशा हमें इस सिलो p सबग्रुप के लिए हमेशा कोई ना कोई g मिलेगा सच दैट इसके कॉन्जुगेट में हर कोई भी p सबग्रुप एज अ सबग्रुप इसके अंदर कंटेंट करेगा। ठीक, अब ये बात हमने ऑलरेडी जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने एक स्टेटमेंट प्रूफ किया था और वहाँ पर हमने एक सेट कंस्ट्रक्ट किया था P1, P2, P3 एंड PR और एट द एंड ऑफ दैट प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट हमने ये देखा था दैट P1, P2, PR ये सभी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट इसका मतलब इनका जो फॉर्म है हमेशा जी इनवर्स टाइप का रहा होगा। तो अगर इसी स्टेटमेंट को हम उस लेमा के रेफरेंस में बोलें तो हम कहेंगे दैट क्यू कंटेंट इन एनी ऑफ P1, P2, PR एंड सो। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट ये कहता है दैट एनी टू सिलो पी सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट इन जी। हमने जब सेट बनाया था एस जिसके अंदर इस तरीके के एलिमेंट थे P1, P2 एंड सो ऑन PR, तो हमने ये देखा था दैट P1 इज कॉन्जुगेट टू P2, P1 इज कॉन्जुगेट टू P3 एंड सो ऑन। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट इस सेट एस का आपस में कॉन्जुगेट है और इस सेट में हमने जी के सारे सिलो पी सब ग्रुप्स का कलेक्शन लिया था। इसका मतलब जितने भी सिलो पी सब ग्रुप्स होते हैं वो आपस में जी में कॉन्जुगेट होते हैं। वैसे ही स्टेटमेंट हम डिटेल में हमारे इस लेक्चर से जस्ट पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वहाँ पर हमने देखा था इसको। ठीक है, बट एज अ पार्ट ऑफ प्रूफ फॉर द सेकेंड statement of Sylow's theorem we will also again go through this statement। okay, now let me write the third part of Sylow's theorem and it says third part says about the number of Sylow p subgroups। it says the number of Sylow p subgroups
of G is of the form 1 plus kp. Okay, that is, we can write the number of Sylow p subgroup, that is np, is always congruent to 1 mod p. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? एन पी माइनस वन डिवाइड्स पी। आपने अगर कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट देखा होगा देन इसका मतलब क्या है? दैट एन पी माइनस वन, दिस इज डिविजिबल बाई पी। ओके, अगर ये पी से डिविजिबल है इसका मीनिंग क्या है? दैट देयर एग्जिस्ट सम के सच दैट पी के इज इक्वल्स टू एन पी माइनस वन, और यहाँ से हम एन पी को क्या लिख सकते हैं? एन पी इज इक्वल टू वन प्लस पी के, यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो वन प्लस के पी फॉर्म का लिखना या फिर एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी लिखना, दोनों बातें सेम ही है। एंड देन फर्दर वी हैव सम मोर कंक्लूजन्स एंड इट सेज further np, that is the number of Sylow p subgroups, is the index of the normalizer that is normalizer of p in G, that is further np is the index of normalizer of p in G, that is np is equal to index in G of normalizer of p in G, ये हमने कह रखा है। ठीक है, और जैसे ही हमने लिखा दैट एन पी इज द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ जी, अब हम ये कह रहे हैं कि एन पी अगर इस फॉर्म का, इसका मतलब एन पी हमेशा इस जी को डिवाइड करेगा, जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करने वाला है। ठीक है, और एन पी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट किस तरीके से? वन प्लस के पी फॉर्म के हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से वी कैन कंक्लूड एंड दिस एन पी ऑलवेज डिवाइड्स एन। ठीक है, ये भी हम इस थर्ड स्टेटमेंट की इस पार्ट में ये प्रूफ करने वाले। ठीक, नाउ लेट मी राइट द प्रूफ ऑफ दिस थ्री स्टेटमेंट। द प्रूफ्स आर वेरी सिंपल बट कंस्ट्रक्टिव। ओके, सो लेट अस गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रूफ। जो इसके अंदर दो स्टेटमेंट काम आने हैं वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं।